हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी अगेन एंड आप सभी भक्तों का आज के सुबह के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा आप लोगों को मालूम है कि आजकल दामोदर महीना चल रहा है। दामोदर महीना कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है। कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है क्योंकि ये राधा रानी को बहुत प्रिय है। और स्कंद पुराण में वेद व्यास जी हमको बताते हैं कि जिस तरह से सारे युगों में सतयुग सर्वश्रेष्ठ है, जिस तरह से सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ है, जिस तरह से सभी शास्त्रों में वेद सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी तरह से सारे महीनों में दामोदर मास सर्वश्रेष्ठ है। और पद्म पुराण में कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस तरह से सभी पौधों के अंदर तुलसी मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, जिस तरह से सभी धाम में द्वारका धाम मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, जिस तरह से सभी दिनों में मुझे एकादशी सबसे ज़्यादा प्रिय है, उसी तरह से सभी महीनों में मुझे दामोदर मास बहुत ज़्यादा प्रिय है। और दामोदर मास की महिमा के बारे में सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास के अध्याय 16 में विस्तार से व्याख्या करी है। उसके अंदर उन्होंने हमको बताया है कि दामोदर मास करने का क्या फल होता है, नहीं करने का क्या नुकसान होता है। और दामोदर मास के अंदर कृष्ण भगवान ने अपनी बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं दिखाई हैं। दामोदर मास के अंदर बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं। दामोदर मास में जैसे आपको मालूम है कि बहुलाष्टमी के दिन राधा कुंड कृष्ण कुंड का प्राकट्य हुआ था। तो उसमें स्नान करने से हमको कृष्ण भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। फिर धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान ने उनका प्राकट्य हुआ था। फिर धनतेरस के दिन जैसा आपको मालूम है कि हम घर की चौखट के बाहर एक दीपक चाहते हैं। तो वह दीपक हम कई बार लोग सोचते हैं कि वह दीपक लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वह दीपक यमराज जी का स्वागत करने के लिए चाहते हैं। यमराज जी 12 महाजन में से एक महाजन है। और ऐसा सनातन गोस्वामी बताते हैं कि धनतेरस के दिन अगर जो भी व्यक्ति अपने घर की चौखट के बाहर दीपक चाहता है यमराज जी के निमित्त, तो उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होती। और धनतेरस के बाद नरका चतुर्दशी आती है, जिस दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था। उसके बाद में अमावस्या आती है, जिस दिन लोग गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। तो वो पूजन क्यों करते हैं उसको हमें मालूम नहीं। लक्ष्मी जी गणेश जी का पूजन क्यों होता है, ये शायद लौकिक परंपरा है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिवाली के दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट कर रावण का वध कर कर सीता माता लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ अयोध्या वापस पधारे थे। तो उनके स्वागत में सभी अयोध्या वासियों ने घी के और तेल के लैम्प चासे थे। और इसके बाद में जैसा हमको मालूम है इसी महीने के अंदर कृष्ण भगवान ने गोवर्धन लीला दिखाई थी, जिसके अंदर अपने भक्तों को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने उल्टे हाथ की स्कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा के रखा था। और गोवर्धन लीला के अगले दिन भाई दूज आती है। इस दिन यमराज जी अपनी बहन यमुना जी के घर गए थे और यमुना जी ने उनको प्रसाद अर्पण किया था। और प्रसाद उनको इतना अच्छा लगा यमराज जी को कि उन्होंने यमराज जी को वरदान दिया कि भाई दूज के दिन जो भी तुम्हारे पास आएगा उसको सारे पापों से मुक्ति मिलेगी। तो इसीलिए इस दिन प्रथा है कि भाई दूज के दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं, वहाँ बहनों के हाथ का बनाया हुआ खाना खाते हैं। और यमराज जी के वरदान के कारण उन सभी भाइयों को जो बहन के हाथ का प्रसाद खाते हैं उनकी स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, आयु में वृद्धि होती है। और इसके बाद में देव उत्थान एकादशी आती है। इस दिन विष्णु भगवान 4 महीने के बाद अपनी योग निद्रा से उठते हैं। और फिर द्वादशी आती है, भीष्म पंचक आता है। तो इस तरह से कुल मिला जुला के ये दामोदर का महीना कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है, राधा रानी को बहुत प्रिय है, भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय है। और दामोदर मास के अंदर परंपरा है और हमारे शास्त्रों में बताया गया है भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको नियमित रूप से गजेंद्र मोक्ष की लीला है उसका पाठ करना चाहिए। और गजेंद्र मोक्ष की लीला ये बहुत ही सुंदर लीला है।
इस लीला के अंदर दो पात्र हैं विशेष रूप से, एक मगरमच्छ हैं और एक हाथी है, और दोनों के विषय में उनकी पूर्व जन्म की कथा है कि पूर्व जन्म के अंदर मगरमच्छ गंधर्व नगर में राजा थे और उनका नाम हू था, और एक बार वह नदी में स्नान करने गए और वहाँ पर गलती से उन्होंने देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। तो देवल ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने श्राप दिया कि तुम अभी जाकर मगरमच्छ बन जाओ। तो देवल ऋषि के श्राप के कारण गंधर्व नगर के राजा को मगरमच्छ बनना पड़ा। और दूसरी तरफ गजेंद्र जी पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम इंद्रद्युमन था, और अपने सांसारिक जिम्मेवारियों को पूरी करने के बाद वह वन में गए, वहाँ पर उन्होंने भगवान की भक्ति करी। तो गजेंद्र जी पूर्व जन्म में भगवान के बहुत बड़े भक्त थे वो, और इतनी ध्यान से भक्ति करते थे कि जब वो भगवान के नाम का जप करते थे, ध्यान लगाते थे, तो उनको अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी सुध-बुध नहीं रहती थी। तो एक दिन इसी अवस्था में थे वह, भगवान के नाम जपने लगे थे, आंखें बंद थी। अगस्त्य मुनि उनके आश्रम में आए अपने शिष्यों के साथ में, लेकिन संयोगवश इंद्रद्युमन महाराज अगस्त्य मुनि और उनके शिष्यों का स्वागत नहीं कर पाए। तो अगस्त्य मुनि को क्रोध आया, उनको विश्वास नहीं हुआ कि एक राजा भी भगवान के ध्यान में इतना मग्न हो सकता है। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम हाथी बन जाओ। तो इस तरह से इंद्रद्युमन महाराज जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, उनको एक वैष्णव के प्रति अपराध करने के कारण जो अपराध अनजाने में हुआ था, उनको अगले जन्म में हाथी बनना पड़ा। लेकिन चूंकि इंद्रद्युमन महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो वे एक साधारण हाथी नहीं बने। वह श्वेत द्वीप में त्रिकूट नाम का पर्वत है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ, और उस पर्वत के ऊपर वह जो हाथियों का झुंड है उसके वो राजा थे हुए। और सिर्फ हाथियों के समूह के राजा नहीं थे, त्रिकूट पर्वत के ऊपर, त्रिकूट पर्वत बहुत विशाल पर्वत है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे अध्याय में 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया कि इसकी ऊंचाई 10,000 योजन है। एक योजन कई माइल्स के बराबर होता है। तो इसकी ऊंचाई 10,000 योजन है, लंबाई चौड़ाई 80,000 योजन है। इसकी जो पर्वत की 3 चोटियां हैं, एक चोटी सोने से है, एक चोटी चांदी से बनी हुई, एक चोटी उसके ऊपर क्या नाम है कॉपर से है ना। और वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर पर्वत के ऊपर मणियाँ निकली हुई होती हैं, बहुत ही सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, फ्लावर्स हैं, नदियाँ हैं, झील हैं। तो और इतना भव्यशाली त्रिकूट पर्वत है कि उस पर्वत के ऊपर देवी देवता भी रमण करने के लिए आते हैं वहाँ पर। तो इस पर्वत पर इसका जन्म हुआ, और यहाँ पर गजराज का राजा था, और इतना शक्तिशाली था कि अगर शेर को गजराज की, गजेंद्र जी की थोड़ी सुगंध भी आ जाए तो वह डर के मारे दूर दूर भाग जाते थे। साधारणतः तो हम देखते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है और शेर से डर कर हाथी भी दूर दूर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा था कि वह इतने शक्तिशाली थे कि शेर भी उनकी गंध मात्र से, देखने से नहीं, गंध मात्र से दूर दूर भाग जाते थे। तो एक दिन गजेंद्र जी त्रिकूट पर्वत पर रमण कर रहे थे अपने मित्रों, पत्नियों और बच्चों के साथ में। दोपहर का समय था, घूमते घूमते उनको बहुत प्यास लगी, और वहीं पर पास में एक झील थी। और तो गजेंद्र जी की इच्छा हुई कि वहाँ पर जाके मैं अपनी थकान कम करूं, पानी पीऊं। तो वह पूरे झुंड के साथ उस झील के ऊपर पहुँचे, झील में प्रवेश किया, स्नान किया, पहले अपनी थकान उतारी, फिर पानी पिया। उसके बाद में अपने बच्चों को बुलाया, बच्चों ने स्नान किया, फिर पत्नी को बुलाया, पत्नी ने स्नान किया, मित्रों को बुलाया, उन्होंने स्नान किया, सबने पानी पिया। और उसके बाद में
गजराज जी का मन हुआ कि अभी थोड़ी जल क्रीड़ा करनी चाहिए, तो अपनी सूंड में पानी भरकर अपनी पत्नियों के ऊपर डाल रहे थे, फिर बच्चों के ऊपर डाल रहे थे। तो इस तरह से वह जल क्रीड़ा के अंदर मग्न हो गए। और इस बीच में नदी के अंदर वहाँ पर एक मगरमच्छ रहता था, और चूंकि इतने सारे हाथी सब एक साथ नदी के अंदर प्रवेश किए और वहाँ पे काफ़ी समय तक रहे और जल क्रीड़ा कर रहे थे, तो नदी में रहने वाले जितने जीव थे वो उनको कष्ट हुआ, और जो उनका राजा था मगरमच्छ, उसने गजराज जी का पैर पकड़ लिया। अब जो गजेंद्र जी है उनको अपनी शक्ति के ऊपर बहुत अभिमान था। उन्होंने एक झटका दिया। उन्होंने सोचा कि ये क्या है, ये तो इसको एक झटका दूंगा तो पता नहीं कौन है, मेरा पैर छूट जाएगा। लेकिन ही वॉज सरप्राइज्ड कि उन्होंने एक जोर से झटका दिया, लेकिन फिर भी वो मगरमच्छ के मुख से अपना पैर नहीं छुड़ा पाए। एक बार, दो बार, तीन बार वो अपना पैर नहीं छुड़ा पाए। और उनकी पत्नी ने जब देखा कि हमारे पति संकट में हैं और अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे, तो उन्होंने रोना शुरू किया। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अपने पति को जाकर बचा पाए। और बच्चे तो खैर नहीं, वे छोटे थे बच्चे, बेचारे क्या करते हैं ना। और लेकिन गजेंद्र जी को मित्र थे, उन्होंने सब ने जोर लगाया मगरमच्छ को पीछे से पकड़कर कि किसी तरह से मगरमच्छ के मुख से गजेंद्र जी का पैर बाहर निकाल दें, लेकिन प्रयास असफल रहे। तो इस तरह से 1000 साल तक मगरमच्छ और गजेंद्र जी के बीच में ये युद्ध चलता रहा। तो कभी गजेंद्र जी मगरमच्छ को पानी से बाहर निकालने का प्रयास करते और कभी मगरमच्छ दोबारा गजेंद्र जी को पानी के अंदर ले जाता। और धीरे धीरे गजेंद्र जी की शक्ति कम होती गई, क्योंकि जैसा हमको मालूम है कि हाथी धरती पर रहने वाला जीव है और मगरमच्छ पानी में रहने वाला जीव है। तो फॉर गजेंद्र जी इट वॉज ए फॉरेन प्लेस, द प्लेस वॉज नॉट मेंट फॉर हिम। सो वो धीरे धीरे कमज़ोर होते गए, और जितना वह कमज़ोर हुए उसी अनुपात में मगरमच्छ शक्तिशाली होता गया। तो गजेंद्र जी बहुत कष्ट में थे, और इसी बीच में उनको एक दिन एहसास हुआ कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। मैं खुद इतना शक्तिशाली हूँ, मेरे मित्र इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन हम सब मिलकर भी गजेंद्र के मुख से पैर नहीं छुड़ा पाए। तो फिर उनको लगा कि यह तो मगरमच्छ का पाश नहीं है, यह तो विधाता का पाश है। तो यह जिसका पाश है और जिसकी इच्छा से मैं इस संकट में फंसा हूँ, मुझे उसी की शरण लेनी चाहिए। और फिर एक बहुत सुंदर चीज़ बोलते हैं वह कहते हैं कि इस संसार में ज़्यादातर व्यक्तियों को भगवान के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन भगवान सभी जगह विद्यमान है। किस रूप में? एक काल रूपी सर्प के रूप में सभी जगह विद्यमान है। यह कश्चिनेशो बलिनो अंत कोरगात प्रचंड वेगात अभिधावितो भृशम भीतम प्रपन्न परिपाति मद भयात मृत्यु प्रधावती अहरणम तमीमहि। वह कहते हैं कि यह कश्चिनेशो बलिनो अंत कोरगात, कि यह तो विधाता का पाश है। सभी को विधाता के बारे में नहीं मालूम, लेकिन विधाता सभी के पास है काल रूपी सर्प के रूप में। और यह काल रूपी सर्प किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अपने मुख में ले सकता है। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि कोई भी व्यक्ति इस काल से डर कर, काल से बचने के लिए भगवान की शरण लेता है, तो भगवान उसको शरणागति देते हैं और उसको अभयदान देते हैं। और
इसके बाद में गजेंद्र जी भगवान की शरण लेते हैं और शरण लेने के बाद में वह भगवान की स्तुति करते हैं। वह स्तुति श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद अध्याय 3 श्लोक नंबर 2 से 29। तो 28 श्लोकों में भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। तो गजेंद्र जी ने भगवान की स्तुति करी, यह बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है कि वह हाथी के शरीर में थे। इस संसार में हमको कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि जहाँ पर हाथी भागवतम के श्लोक बोलेंगे, लेकिन गजेंद्र जी ने भागवतम के श्लोक बोले, 28 श्लोक बोले। तो किस कारण से वह 28 श्लोक बोल पाए, वह कारण श्रीमद् भागवतम के 8वां स्कंद अध्याय 3 श्लोक 1 में दिया गया। तो अभी हम इस श्लोक का उच्चारण करेंगे और उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि गजेंद्र मोक्ष की लीला से हमको क्या शिक्षा मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीबादरायणी उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम्। श्रीबादरायणी उवाच। श्री Shukdev Goswami said, Evam, thus, Vyavasitah, fixed, Buddhya, by intelligence, Samadhaya, for concentration, Manaha, the mind, Hridi, in consciousness or in the heart, Jajapa, he chanted, Paramam, a supreme, Japyam, mantra he had learned from great devotees, Prag Janmani, in his previous birth, Anusikshitam, practiced. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Sri Shukdev Goswami continued, thereafter the king of the elephants, Gajendra, fixed his mind in his heart with perfect intelligence and chanted a mantra which he had learned in his previous birth as Indradhyumna, and which he remembered by the grace of Krishna. Purport. Such remembrance is described in Bhagavad Gita 6.4344. Tatra tam buddhi samyogam labhate paurvadehikam yatate cha tato bhuyah samsiddhau kurunandana purvabhyasena teineva hriyate avashopi sah. In these verses, it is assured that even if a person engaged in devotion service falls down, he is not degraded, but is placed in a position in which he will in due course of time remember the Supreme Personality of Godhead. As explained later, Gajendra was formerly King Indradhyumna, and somehow or other in his next life he became king of the elephants. Now Gajendra was in danger, and although he was in a body other than that of a human being, he remembered the stotra he had chanted in his previous life. Yatate cha tato bhuyah samsiddhau kuru nandana. To enable one to achieve perfection, Krishna gives one the chance to remember him again. This is proved here
For although the king of the elephants, Gajendra, was put in danger, this was a chance for him to remember his previous devotional activities so that he could immediately be rescued by the Supreme Personality of Godhead. It is imperative that all devotees in Krishna consciousness practice chanting some mantra. Certainly, one should chant the Hare Krishna mantra, which is the Maha Mantra or Great Mantra, and also one should practice chanting Chintamani Prakara Sadmasu or the Nrsimha Stotra, Ito Nrsimha Parato Nrsimha, Yato Yato Yami Tato Nrsimha. Every devotee should practice in order to chant some mantra perfectly, so that even though he may be imperfect in spiritual consciousness in this life, in his next life he will not forget Krishna consciousness even if he becomes an animal. Of course, a devotee should try to perfect his Krishna consciousness in this life, for simply by understanding Krishna and his instructions, after giving up his body, one can return home back to Godhead. Even if there is some fall down, practice of Krishna consciousness never goes in vain. For example, Ajamila in his boyhood practiced chanting the name of Narayana under the direction of his father, but later in his youth he fell down and became a drunkard, woman hunter, rogue, and thief. Nonetheless, because of the chanting of the name, because of chanting the name of Narayana for the purpose of calling his son, whom he had named Narayana, he became advanced, even though he was involved in sinful activities. Therefore, we should not forget the chanting of the Hare Krishna mantra under any circumstances. It will help us in the greatest danger, as we find in the life of Gajendra. Srila Prabhupada ki jai. So, this is a very beautiful verse, a very beautiful purport given by Srila Prabhupada. It needs a good amount of time to have the deliberation and discussion, लेकिन अभी उतना समय नहीं है, तो इन ब्रीफ संक्षिप्त में मैं आपको इस लीला के द्वारा भगवान हमको क्या संदेश देते हैं उस विषय में कुछ बताना चाहूँगा। तो अभी हमने लीला सुनी और लीला के अंत में जैसे मैंने आपको बताया कि गजेंद्र जी भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, 28 श्लोक बोलते हैं। तो 28 श्लोक क्यों बोल पाए उसका कारण इस श्लोक में दिया गया। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि, कि गजेंद्र जी ने अपना मन और बुद्धि अच्छी तरह से समाधाय, अच्छी तरह से व्यवसितो फिक्स्ड भगवान के ऊपर लगाई है। समाधाया कि मतलब उनका मन इधर उधर कहीं नहीं था, और व्यवस्थितो कि बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा होगा बरगद का पेड़ होता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, उसको कोई ज़मीन से बाहर निकालना चाहे तो निकाल नहीं सकता। तो गजेंद्र जी ने इस तरह से अपना मन भगवान के ऊपर लगाए कि कुछ भी करें, कोई भी व्यक्ति प्रयास करे तो वह मन भगवान से दूर नहीं जा सकता। और ध्यान रखने वाली बात है कि गजेंद्र जी अभी भी संकट में हैं। उनका पैर मगरमच्छ ने पकड़ रखा है और 1000 साल तक युद्ध कर रहे थे और अभी भी युद्ध चल रहा है, और उनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो गई है ना, और उनको एहसास है कि अभी मेरी मृत्यु मेरे बिल्कुल नज़दीक है। तो इस अवस्था में उन्होंने अपना मन और बुद्धि पूरी तरह से भगवान में लगाई। किस तरह से लगाई? व्यवस्थितो समाधाया, कि कोई चाहे तो भी उसको प्रयास करे तो भी उसको वहाँ से भगवान से हटा नहीं सकता है। और
Jajapa paramam japyam. Jajapa means he chanted. What did he chant? Paramam japyam. Something which is worthy of being chanted. जो जाप करने योग्य है उसके नाम का गजेंद्र जी ने जाप किया। और यहाँ पे अब सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि महाराज ऐसा कैसे हो पाया है ना, एक हाथी के शरीर में और एक जीव जो हाथी के शरीर में है, वह इतने सुंदर स्तोत्र का उच्चारण करता है, तो ऐसा कैसे संभव हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। प्राग मतलब पहला, जन्मनि मतलब जन्म, शिक्षितम का अर्थ होता है अभ्यास करना है, और अनुशिक्षितम का अर्थ है कि उन्होंने बार बार, अनु का अर्थ होता है रिपीटेटिवली है ना, बार बार। तो प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम कि पहले जन्म में उन्होंने इस स्तोत्र का बार बार जाप किया था। ही प्रैक्टिस चैंटिंग ऑफ दिस स्तोत्र अगेन एंड अगेन in his previous birth, and it was due to that reason, उस कारण से गजेंद्र जी हाथी के शरीर में भी भगवान का स्मरण कर पाए, और बाद में जैसा हमको मालूम है कि भगवान स्वयं वैकुंठ धाम से आते हैं गजेंद्र जी को बचाने के लिए। तो इस लीला के द्वारा हमको कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। सबसे पहले जैसे प्रभुपाद जी परपोर्ट में बताते हैं कि हमने पहली जन्म में भगवान की जो भी भक्ति करी है और वो भक्ति हमारी पूरी नहीं होती और हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी आर नॉट डिग्रेडेड इवन इफ वी गेट एन एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ इज ए डिग्रेडेशन, बट our consciousness does not get degraded. And this proves the point that whatever devotion service we perform, the effect is carried in the next life, and we start from the point where we left in the previous birth. इस संसार में हम बहुत परिश्रम करते हैं, फॉर वॉट? जप के लिए नहीं करते, भागवतम के लिए नहीं करते। हमारा ज़्यादातर परिश्रम होता है संसार में भौतिक सुख को अर्जन करने के लिए। वी वर्क वेरी हार्ड टू एक्वायर मटीरियल पोजेशंस। हम लोग बहुत ज़्यादा कष्ट उठाते हैं पढ़ाई करने के लिए, नौकरी के लिए कष्ट उठाते हैं, फिर शादी ब्याह के लिए, फिर बच्चों के लिए, फिर घर बनाने के लिए, गाड़ी के लिए, स्कूटर के लिए, बैंक बैलेंस के लिए। वी एक्वायर सो मेनी थिंग्स, बट एट द टाइम ऑफ डेथ वी हैव टू लीव ऑल दोज थिंग्स हियर, एंड द नेक्स्ट बर्थ वी हैव टू वर्क हार्ड अगेन टू एक्वायर दोज थिंग्स। नेक्स्ट बर्थ वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू एक्वायर all these possessions what we have left in the previous birth. But the devotion service is something which you don't have to start from zero in the next birth. You start from the point where you left in the previous birth. So from this incident we understand that we must spend time in practicing and perfecting Hare Krishna Mahamantra. Srila Prabhupada says in the purport, it is imperative. Imperative means it is must. Therefore, that all devotees in Krishna consciousness must practice chanting some mantra. हरे कृष्णा मंत्र तो इट्स अ महामंत्र। अगर किसी व्यक्ति के हरे कृष्णा मंत्र में रुचि नहीं है तो कोई भी मंत्र हो जिसमें भगवान का नाम हो, कृष्ण भगवान का नाम हो, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ईश्वर परमा कृष्ण, एनीथिंग which has got Lord Krishna's name must be practiced. And प्रभुपाद जी कहते हैं कि it should be
one, of course, a devotee should try to perfect his Krishna consciousness. कि जो भी मंत्र चैंट करते हैं, we should achieve perfection in that. And अगर हम ऐसा करेंगे, so it can save us even from the greatest danger. भगवद गीता के अंदर कृष्ण भगवान बोलते हैं ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायन विद्यते. There is no loss or diminution in this endeavor. In this endeavor means the endeavor in Krishna consciousness. And Isvalpamasya Dharmasya, even a little fragmental devotion service can save us. Trayate Mahato Bhaya. It can save us from the greatest danger. So you can see कि गजेंद्र जी तो क्या, he was just on the verge of death. Right? But somehow, due to his devotion service which he had done in the past, although he was in the elephant body, still it was Krishna situated in his heart who made him remember himself. So this is the mercy of Krishna. Right? Bad activity, the bad karma was done by Indradhumna. He got the punishment, right, by getting an elephant body. But Krishna was so merciful that even in the elephant life, elephant body, when he was in danger, Krishna in his heart made him remind, hey, please remember what you chanted. And by Krishna's mercy, he chanted that mantra and Krishna ran from his dham to save him. So that's the first thing that we should try to do the devotion service as much as possible in this birth, so that we have the chance of getting liberated in the coming birth. And second thing is that we never know at what time we will be caught in the danger. No matter how powerful we are, how many possessions we have got, how much wealth we have got, within no time we can be in a danger, we can be in such a situation where whatever is around us will not help us and we will not be able to enjoy it. In the Śrīmad Bhāgavatam, the second chapter of the 8th Canto, Shukadeva Goswami describes the glories of the mountain, the power of Gajendra, in about 19 or 20 verses. So what is the need of giving the dimensions of the Trikuta Parvat, the beauty of the Trikuta Parvat? How does it help in our devotion service? By giving the description of the Trikuta Parvat, Shukadeva Goswami wants to tell us that just see, the elephant was the king in such a huge mountain. But within no time, he was deprived of all these opulences, what he had got. And for 1000 years, although he was in the midst of those opulences, nothing could save him. So similarly, when we are in the danger, first of all, we should know that the danger is padam padam eduptam. Anytime we can be in such a situation where we have everything but still we don't have anything. And we are in a great danger, but whatever is around us will not be able to save us from the danger. And third thing, we have to understand that we should have the minimum contact with the material energy. Material energy means anything see in this material world, anything material we see in this material world, we have experienced in this material world. Whatever is in the material world, we should try to have the minimum contact with that energy.
Otherwise, we can be in a very dangerous situation. The more we stay in touch with the material energy, or the more we try to enjoy the material possessions, the more we are dragging ourselves into a dangerous situation. In case of Gajendra, it was not wrong that he was thirsty and he had to drink the water from the lake. This is all justified. This is the need of the body. But what went wrong? He entered into the lake, took the bath, then drank the water, then invited everybody, then had the bath, drank the water. Then after that they started playing in the water. And he forgot that the lake is not the place for him to live in. He should have drank the water, or maximum took the bath and immediately come out from the river. But the mistake he did, he got indulged, or he engaged himself excessively, enjoying that material energy. Right? If he had simply taken the bath, drank the water, came out from the river, there was no problem. Right? So similarly in our case, the more we try to enjoy the material energy, the more we drag ourselves into a dangerous position which we cannot see, but the danger is waiting for us. And the thing is that the more we are in touch with the material energy, the more we get caught by that material energy, the more we get attached to that particular thing. And those things will not leave us. गजेंद्र जी पानी के अंदर थे, पानी के अंदर गए वहां पर, and crocodile was there, caught the leg. And then you see how much he tried. He couldn't get himself released. So the point is that once the material energy catches us, or we get attracted to anything material in the material world, it's very difficult for us to relieve ourselves from that attachment. So that's why we should have the minimum contact with anything material in this material world, and we should keep ourselves watching that am I getting excessively attached to this thing or not. And we should remember that anything we get attached to except Krishna is going to put us in trouble. Another lesson we learned from this pastime, that when we are in the danger, we may work on different solutions, material solutions. But along with those solutions, we should not forget Krishna. Because it is Krishna who will make any solution to work on, to be successful. In the Gajendra Moksha prayers, there is in one of the verses, Krishna's name has been given as Sarva Pratyaya Hetave. Sarva Pratyaya Hetave means he can do the pratikara. He has a solution for all the problems. Only Krishna, not everybody else, not anybody else. And what we do whenever we are in danger, we run here and there, right? We try to take this, we try to seek the help of so many people around us. And when we cannot save ourselves from all our material means, that time we approach Krishna. But the point is that why do we do this thing? When we are in a difficult situation, first thing we should surrender to Krishna, right? Then start working on other solutions. So there will be
less effect of the miseries. Gajendra, he fought for 1000 years. Then he remembered. Imagine, as soon as he was caught by the crocodile, after a few minutes, or maybe after 1 day, 2 days, 3 days, he would have thought, why I am not able to rescue myself? And that time itself, he could have remembered the Lord. Lord could have saved him, but he continued to rely on his strength for 1000 years, and he continued to suffer. So we should remember that in any dangerous situation, of course, we may have to work on some material solutions, but we should remember one thing, that we must stay connected with Krishna. We should not give up the shelter of Krishna. We should not give up our faith in Krishna. And then the last thing, हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि संकट के समय हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए, कि when we are in the danger we should take the shelter of Krishna, right? I also told you just now. But what is the meaning of taking the shelter of Krishna? So taking the shelter of Krishna means, first of all, you find out where is the Krishna. Now, where is Krishna? Where is Krishna? Krishna is with the devotees. Krishna is the property of the devotees. So if you want to take the shelter of Krishna, we should find where is Krishna. And where is Krishna? Wherever the devotees are there, Krishna is there. Now, where are the devotees? Bhakt हमें कहाँ मिलेंगे? Bhakt हमें सत्संग में मिलेंगे. We find the devotees in the satsang. So that's why the satsang is very important. And if we stay connected with the devotees, what may happen? That we may not be able to perfect our Krishna consciousness. But since we are connected with the devotee who has perfected himself or herself in Krishna consciousness, we will be liberated. In this past time, both were in danger. Magarmacha, although he was powerful, but still he was in danger, because he had to fight with a very powerful creature, Gajendra. तो जब भगवान आए, तो भगवान ने आने के बाद पहले किसका उद्धार किया? फर्स्ट ही लिबरेटेड crocodile. He killed him, and due to the touch of Krishna, crocodile again got his Gandharva body. And then he released Gajendra from the mouth of crocodile. And the point is that the stotra, the verses were not chanted by crocodile. मगरमच्छ ने भगवान की स्तुति नहीं करी, स्तुति तो गजेंद्र ने करी थी. लेकिन मगरमच्छ का उद्धार क्यों हुआ? Because he was holding on to the feet of an animal or a jiva who was a devotee in the previous birth, and in this birth also, when Gajendra was reciting the stotra, Magarmacha, crocodile, was holding his feet. So when Gajendra was performing the devotion service, crocodile was holding his feet. So that was the Agyat Sukriti done by crocodile, and due to this Agyat Sukriti, he got liberated. In the past time, Dhruv Maharaj also we see that after completing his duration in this universe, from the Vaikunt Dham, Vishnu Dutas came with the transcendental plane, and he boarded onto the plane. Then he said, okay, no, I don't want to go. I wanted to get down. Vishnu Dutas said, why do you want to get down? He said, no, I cannot go without my mother. So Vishnu Dutas says, why do you worry about mother? Why shouldn't I be worried about my mother? Right? I don't want to go alone. So Vishnu Dutas says, just look at there. And then Dhruv Maharaj saw that in front of
his plane. There was another plane where his mother was on board. Now, Suniti did not go to the forest, did not perform the austerities as Dhruv Maharaj did. But still, his plane was ahead of Dhruv Maharaj's plane. Why? Because simply he was connected with a very great devotee of the Lord. So the point we have to remember that we must always stay connected with the pure devotees. We must always remain in their shelter. And we should always seek the opportunities to serve the devotees. When we chant Hare Krishna Mahamantra, it is the customary devotees, they chant Hare Krishna mantra with a mood that Radharani, please engage me in Lord Krishna's devotion service. But we should remember, engaging in Krishna's devotion service means engaging ourselves in the service of the devotees of the devotees of the devotees of Lord Krishna. Because we should not think that we go to the Golok Dham and there are other devotees who are serving Krishna, and we tell those devotees, give me the sight, let me serve Krishna. Can you think this can happen? No, this will not happen. So already Golok Dham is filled with the great devotees, right? So serving Krishna in Golok Dham means we reach over there and get engaged in serving the devotees and serving the Guru Maharaj. That's what we do. So Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, thank you so much for your time and attention. Now we are running out of the time. So at the conclusion of this session, I request if any devotee has got any questions or comments, they are welcome. Otherwise, after that, I will ask each devotee to repeat one sentence, just one sentence, very quickly, what they liked from this katha. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you for Dandakana Bhale. Thank you for giving us a beautiful conclusion. And any devotees have any questions, they can come forward and can ask. There is one question, like we, as you told Bhale, the more we are in touch with the material energy, we get caught more and more. And once we get attached to material, it's very difficult to get detachment. That's what you know. But we generally, the misconception in the when we step in the early Krishna consciousness. So what we see as a material energy, like the family persons, like a wife, children. These are, we generally tend to हम उनसे दूर जाने का या उनसे थोड़ा अलग behave करने बोले. But not that कि we should not go into body consciousness, we should go into more into the consciousness of the soul. Subtle way से हम लोगों को so हम इसको कैसा differentiate करना चाहिए and how much we need to interfere in their life. Please guide करें so that how we can change our internal thinking. So Prabhu, material energy, everything in this material world is a material energy. Now even our family members, they are also the material energy. So we can see our family members as simply material energy, or we can see our family members as a devotee of the Lord. Jivere Swarup hai Nitya Krishna Das, that each and every living entity in this material world is a servant of Krishna. That's a constitutional position. So when we are in touch with our family members, which is a material energy, right? And we have to do something for them, then we should remember that I am not simply serving my wife, I am not simply serving my children, I am serving devotees of the Lord. Right? That should be our mood. And if we have that mood that I am serving the devotees of the Lord, and we see them as the devotees, then as I said, attachment to the devotees is good. That takes us to the path of liberation.
But if I see my wife as a simply a means of enjoying my senses, see my children as simply children who will earn the money for me, then it's simply a material energy. Then we drag down to the hell, right, or in a degraded position. All the time now we have to watch ourselves that what is our consciousness when we are in this material world. Srila Prabhupada has named this movement as a Krishna conscious movement. So what is important for us is the consciousness. Okay, what is our consciousness when we are dealing with this material world? So as long as my consciousness is that whosoever is around me is a devotee of Krishna and I have to serve them and it is my duty to serve them, there is nothing wrong with that. And one more thing, Prabhu, they are getting excessively engaged with the material energy means, like see, we all have, that so many desires and, the lust and greed, right? So you have the desire to have, say a car, so you got the Toyota car and after Toyota you think, okay, now let me have the Lexus, after have the Lexus, then let me have the Range Rover, blah, blah, right, Then what happened, we are getting excessively attached to the material energy and for that there is no end, for that there is no end. So whenever we are in this situation, we should watch ourselves and we should talk to the devotees whenever we have any such kind of confusion, and then the devotees will be able to guide us better. So that's my understanding, Prabhu. But material energy, we should not think that my wife is a material energy, my son is a material energy, and we simply ignore them and we don't fulfill our responsibilities towards them. Right, Prabhuji, we should be conscious of their needs also. Right, we should be conscious of the fact that those jivas, those souls have come with their own prarabdha. Those souls not necessarily will behave as I want them to behave. So we have to tolerate them. We have to tolerate their moods. That's also part of the devotion service. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Guruji. Thank you for beautifully explaining. And Sneha Mataji has told that importance of Mahamantra we learned from this Gajendra Moksha, what we have. And one more devotee, Rajat Sharma, Prabhuji is asking, Hare Krishna, Prabhuji, how to perfect Krishna consciousness? Sometimes we are chanting properly, but sometimes we are not able to maintain the quality. So can you please enlighten? Yeah. Maintain the quality, Prabhu, any problem, nashta prayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya. Okay, whatever auspicious things are there, nashta, they all get destroyed. Nityam bhagavata sevaya. Bhagavatam means the Śrīmad Bhāgavatam. Another meaning of Bhagavata is the devotees. So we have to serve the devotees every day. Means we have to stay connected with the devotees on a daily basis. So if I feel that I am weak in chanting, I am not able to concentrate on the chanting, then we have to chant in the association of the devotees who chant better than us. If we don't find anybody around us, we are not able to visit anybody's house, then okay, you have the Prabhupada, Srila Prabhupada chanting 16 rounds. Those tapes are available on the YouTube and the internet. So we can play that, and that's also associated with the Prabhupada. And that's why in the temple, Prabhupada started the parampara that in the morning after Mangala Arati and Tulsi Arati, the devotees, they sit together and chant. Because when we are together, then the concentration is better, right? And that's what we should try to do. Yeah, so better, Prabhu, we should, not only you, it's for everybody. We should connect ourselves more and more with the devotees who chant better than us. Similarly, if we want to improve in Śrīmad Bhāgavatam, we should connect with the devotees who have studied Śrīmad Bhāgavatam and who applied Śrīmad Bhāgavatam in their life. That's a solution. Hare Krishna. Thank you, Guruji. Prabhuji, there's one more question. Like as you said, कि crocodile ने भी जैसे गजेंद्र जी का पैर पकड़ा था और उनको पहले मोक्ष मिला था.
विष्णु भगवान के चक्र से. But that was an unfavorable way of catching and pure devotee. But however they are in animal consciousness, how we can understand Prabhuji and what we can take lesson from this? Yeah, Prabhu, the devotion service, favorably or unfavorably, doesn't matter, right? He was catching onto the feet of a devotee of Krishna. The mood was different, right? But still the Agyas Sukriti was there. So Agyas Sukriti has got the tremendous benefit. And Krishna says in the 10th Canto, first part, in the first few verses, that the devotion service we perform in any mood, right, favorably, unfavorably, it is going to give us the benefit. Crocodile, he did not get the liberation. He regained his own, the previous birth body, Gandharva body. So that was a liberation for him. And but the point is that, Prabhu, that we stay in touch with the devotees, whether favorably or unfavorably. We have the benefit. And yesterday in the class, one devotee was telling me about the Amog Leela, the pastime in the Chaitanya Charitamritam. That Amog Leela was not a devotee of Lord Chaitanya, but Sarvabhauma Bhattacharya was a devotee. So due to Sarvabhauma Bhattacharya being the devotee of Krishna, Amog Leela was pardoned by Chaitanya Mahaprabhu. Yeah, so we have to serve Krishna favorably, right? But still, if it cannot be done, that even unfavorably also helps us. Like Kamsa, he did not remember Krishna favorably, right? Kamsa's mood was to kill Krishna, right? But Krishna did not see his mood. Krishna saw the remembrance, that okay, he is remembering me, right? And then he got merged into the the Brahm Jyoti, right? So he got the liberation. Same thing, Putana also, the mood was not favorable, but Krishna did not see the mood. Krishna saw, okay, she has come to give me something, right? So let me accept it, yeah. Hare Krishna. So as you asked, probably like every devotee who has learned something, they can share the points. So starting from myself, I will be sharing probably like you shared so many glories, but I never heard कि जो हम बाहर दिया लगाते हैं दिवाली के टाइम पे is to call the Yamraj, who is in Mahajan. So this is the first time I'm hearing probably, and thank you for sharing with us. And any other devotee who has learned something, they can please share. So yeah, Dhanteras is not to please Lakshmi Devi. It is the appearance day of Lord Dhanvantari, who has given us the Ayurveda Shastra. So we welcome him on Dhanteras day. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Please, जो भी devotees हैं, आपने कुछ भी punching point या कुछ भी आपको याद है, तो please share कीजिए. Hare Krishna. We request devotees to unmute. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. With reference to the Gajendra Moksha, Prabhuji, is it in the Shastra where it says that is it possible for a soul in the lower forms, or in the animal forms or aquarian forms, is it possible for those souls to remember God and liberate themselves, Prabhu? Because the concept so far, to my knowledge, what I understood is this is possible only in the human form. Even in the superior form to the humans, like in the upper planets, even they cannot go to they cannot have the liberation. They have to come back to the human form, only then they can attain the liberation. So, is it possible in the lower forms, given the background of Gajendra Moksha, is it possible for a soul to attain liberation in the lower forms? Thank you, Yes, Prabhuji. yes, Prabhu, it is possible. From this pastime itself, we can understand that even an animal can get the liberation, provided the remembrance of Krishna is there, right? The liberation does not depend on the body of a soul. The liberation depends on the remembrance of Krishna. Anta kale cha mame vismran mukta kalevram.
Lord Krishna says, at the time of leaving his body, whatever persons remember, he attains to that bhava. Right? So here Gajendra was able to remember Krishna. Right? So he was rescued by Krishna. He did not die. Gajendra did not die. As I understand from this pastime, he did not leave his body. Right? But he got liberated means he had a touch of Krishna. And after this, he perfected his, the devotion service and went to Golok Dham. We have another pastime of Bharat Maharaj, who was a great devotee when he was a king. But he got attached to the deer, as I was telling the class. And he got so much attached that he gave up all his devotion service. Bharat Maharaj, he left his kingdom. He was the king of the whole universe. He left his kingdom as if a person is leaving the stool, right? No attachment at all. But he got attached with the deer. And he left his body, and the next birth he became a deer. But still, by Krishna's mercy, he was able to remember that in my previous birth, I was such a great devotee and I got attached with the deer. And by thinking, he left his body, and then again by Krishna's mercy, next birth he became Jad Bharat. He assumed a human body, and the human body again he was able to remember. Thus I was a king, then became a deer, and I have lost 2 lives. Now this life I do not want to waste. So I'll behave like a madman and simply focus on remembering Krishna. Right? So Prabhuji, the liberation does not depend on the body. It depends on the remembrance of Krishna, and even an animal can be liberated in the animal body if one way or other way he gets connected with Krishna. He will achieve the liberation. Yes. Hare Krishna. Prabhu. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat Pranam. Hare Krishna. Yes, Prabhu. And Hare Krishna Prabhuji. So Vinita Mataji shared what the taking from the class, whatever the relative devotional service we do in this birth will be carried forward to our next birth. So also in case if we are not able to attain perfection in this birth also, the devotional will be carried on. Hare Krishna. So okay. So we have a short of time, Prabhu. Yes, Prabhu. So we should conclude the session. Yes. Yes. Thank you, Prabhu. Thank you for giving us all your association, and we expect that you give us more and more association in the coming weeks. So we'll schedule the classes according to Prabhuji. And thank you, Prabhuji. So, Vancha Kalpatarupesh Kripasindhu Vaishnavi Jai Shri Prabhupada ki Jai. Śrīmad Bhāgavatam ki Jai.